प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को संदेश देंगे। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस में 193 देश हैं, 193 कंट्रीज, लेकिन वहां चर्चा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतिहास बदल रहा है। अब भारत दुनिया का एजेंडा सेट कर रहा है। अब भारत जो रास्ता दिखाता है, पूरी दुनिया उसी रास्ते पर चलती है। अब भारत जो संदेश देता है, पूरी दुनिया उसका समर्थन करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौर में हर दिन यही तस्वीर दिख रही है। आज UNGA के बाहर भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। श्रीराम चौलिया है और वहां पे कॉमोडोर GJ सिंह है। ये भी इस बात को मानेंगे कि तिरंगा हमारे गले में है, तिरंगा हमारे दिल में है, तिरंगा हमारे स्वर में है, तिरंगा हमारे शब्दों में है। और ये मैसेज हम जरूर देना चाहते हैं उनको। श्रीराम चौलिया हमारे दिल्ली स्टूडियो में, देखिए माहौल कैसा बना हुआ है आज न्यूयॉर्क के सड़कों में और दिल्ली के फिल्म सिटी में जहां पे हमारा स्टूडियो में है, स्टूडियो में माहौल कैसा बना है। ऐसा माहौल कभी देखने को मिलता है। श्रीराम जी भी कुछ कहना चाहते हैं, सबको मौका दें। मैं दिल्ली में नहीं हूं आपके साथ, मगर सबको मौका दें। श्रीराम जी बोलिए। मैं ये बताना चाहता हूं सर, मैं ये बताना चाहता हूं 10 सेकंड सिर्फ कि हिंदुस्तान की आज उम्मीद क्या होगी अपने प्रधानमंत्री से मेरा परमिशन लिया है? मुझे लगता है कि आज बिल्कुल इसका खुलासा होगा पूरी तरह से कि हिंदुस्तान के जो जूझ रहा है कश्मीर के अंदर, कश्मीर जहाद के द्वारा, वो वही इस्लामिस्ट आर्क जो मिडिल ईस्ट से निकलती है, अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए कश्मीर उसका हिमालयन एंड है। जैसे विश्व भर में जहाद की जंगों को मिलिटरीली तय किया जाता है, हमें भी कश्मीर जहाद को रोकने के लिए, उसको कंटेन करने के लिए हमें अपने तौर तरीके से उसको मिलिट्री ही जवाब देना होगा। मैं समझता हूं कि ये मैसेज जो है आज वहां पे श्रीराम जी जिन्होंने नहीं बोला, जिनको बोलने का मौका नहीं मिला है, श्रीराम जी। अर्नब, आपने 2014 और 19 की तुलना की, इस पे मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। 2014 में हम $2 ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था थी। प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में कहा अब हम $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बने हैं। दुनिया में सबकी निगाहें हम पर इसलिए भी है, महाशक्ति बनते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान और भी पिछड़ गया है। जो स्ट्रेटेजिक गैप जो कहते हैं वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो पहली बात तो यह है। दूसरा, डायस्पोरा, हमारे जो प्रवासी हैं अर्नब, जिस तरह से मोदी जी और बीजेपी ने उन्हें मोबिलाइज किया पिछले 5 सालों में, उसका असर आप देख रहे हैं। ये जो माहौल है वहां पे, ये कोई क्रिकेट वर्ल्ड कप से भी बड़ा है। वो इसलिए है क्योंकि हमने अपनी जो कल्चरल एसेट है, जो हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है, उसको मोबिलाइज किया। तो इकोनॉमी प्लस कल्चर अर्नब इज अनबीटेबल। पाकिस्तान के पास कोई हैसियत ही नहीं है कि हमारी कोई बराबरी कर पाए इन दोनों मामलों में। और इसीलिए ज्यादा लोग जनरल असेंबली जब मोदी जी बोलेंगे, ज्यादा लोग नजर लगाए रहेंगे। इमरान खान तो खुद कबूल भी कर चुका है कि हमारी बात कोई मान नहीं रहा है, क्योंकि सबको बिजनेस और तिजारत की पड़ी है, सबको कारोबार की पड़ी है। जी हाँ, हम कारोबार करते हैं, हम बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है और कारोबार के जरिए ही दुनिया हमारी जो स्टेटस है वो बड़ी है। और इसीलिए ज्यादा लोग निगाहें देखेंगे कि सबसे बड़ा विकासशील देश जो सबसे तेज प्रगति कर रहा है उसकी माने या एक फेल्ड स्टेट की माने। तो ये जो क्रेडिबिलिटी गैप है अर्नब, आज वो साफ नजर आएगा। और इसके बाद ये आखिरी मौका इमरान का। इमरान ऑलरेडी UN सिक्योरिटी काउंसिल में हार चुके हैं, UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में हार चुके हैं, आज UN जनरल असेंबली में हारने वाले हैं, और इसके बाद और कोई फोरम भी नहीं बचा उनके लिए अपनी चिल को मचाने के लिए। तो ये एंड है। ये ऐश्वर्या कपूर, समय बहुत कम है। श्रीराम जी आप स्क्रीन पर रहिए। श्रीराम से यासिर, करीब 2/3 ऑफ द स्पीच, यानी कि 60 से 70% जो स्पीच थी वहां पे फोकस भारत के विकास पर थी। उन्होंने कहा कि हमारा जनादेश मजबूत था। उन्होंने उसके बाद ये कहा कि जब सबसे ज्यादा बड़ा स्वच्छता अभियान होता है, जब सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम होती है, जब सबसे ज्यादा बड़ा वहां पे फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम होती है, फिर उन्होंने कहा कि हमने किस तरह से UID फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम की, हमने भारत ने कैसे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम की, सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में उन्होंने बात की, ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ जो हमारा जो अभियान रहा है उस पर बात की।
तो जो पाकिस्तान के लोग सोच रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी उन पर बात करेगा, तो उनको तो बिल्कुल से एक तरह से साइडलाइन कर दिया प्रधानमंत्री ने। आतंकवाद पर बोला, मगर पाकिस्तान को तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिली स्पीच में। श्रीराम चौलिया, आपकी प्रतिक्रिया। अर्नब, तालियां सबसे ज्यादा हमें सुनाई दी जी श्रीराम जी, तालियां सबसे ज्यादा हमें सुनाई दी जब मोदी जी ने कहा सिंगल यूज प्लास्टिक हमने बैन किया। मोदी जी ने कहा कि हमने हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही बड़े पैमाने पे करोड़ों लोगों के लिए। सबसे ज्यादा तालियां बजी जब उन्होंने पॉजिटिव एजेंडा दिखाया भारत का। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को समझना भी एक माहिरता होती है, उसमें भी एक हुनर होता है। मोदी जी ने सही पकड़ा, नब्ज पकड़ी है इंटरनेशनल कम्युनिटी की। इंटरनेशनल कम्युनिटी चाह रही है कि एक बहुत बड़ा देश है जिसमें ज्यादा गरीबी हुआ करती है, तो वो आगे बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी, ये सवाल हुआ करता। मोदी जी कह रहे हैं देखिए हम निरंतर प्रगति कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात। और दूसरी चीज उन्होंने आपने कहा शांति का पैगाम दिया, वो यही कह रहे हैं कि हम कभी भी नहीं चाहते किसी भी देश के साथ कि कोई छेड़खानी करें। और उन्होंने साथ साथ जो टेरर की बात कही अर्नब, उसका साफ मतलब है कि हमें एक छोटी सी तस्वीर में Ladies and gentlemen, it wouldn't be wrong to say that Imran Khan is obsessed with India. He's completely obsessed to the power of infinity with Prime Minister Narendra Modi. He kept rambling and repeating Prime Minister Modi's name about 100 times while taking the stage at the UNGA. But then we must also give it to him for his honesty. Tonight, before 193 nations, the Pakistani Prime Minister admitted on record that as a country, Pakistan takes money in order to create and indoctrinate terrorism and create and indoctrinate jihadi terrorists. Sreeram Chaulia, what he did was he went to the UN and he was explaining. You know what it means? Raja Faisal, it's not my fault. That has the nukes, he will use that nukes. Yeah, sure. Okay, thank you. Yes, sir, no. Thank you. You need to tell your people. Stand up and shout more. Stand up now. Stand up, Raja. Stand up and shout. Raja is there. We're all shuddering in fear. Stand up and shout. Raja will always be there. Yeah, Sreeram Chaulia. Rajas have been ruling Sreeram Chaulia, what he said was, yes or no? No, Sreeram Chaulia, he said that we have given refuge to Osama bin Laden. Essentially what he did was, he went to the UN stage and he said, there will be more Pulwamas, there will be a bloodbath. So he's using terrorism as an instrument of diplomatic maneuver. He's trying to use the threat of terrorism as a diplomatic instrument. That's how I understand it. Am I correct? He's trying to use it as an instrument of diplomatic coercion. Hatred. First, above all, Arnav, it's an incitement to hatred on the world stage. It is going to be condemned by everybody because he has been referring to Jews and Christians and Hindus and other groups in a denigratory fashion. He has been taking on some kind of a role like President Erdogan of Turkey as a kind of a spokesman for the Islamist cause. More and more the Taliban Khan is coming out, Arnab. You see, one is his admission and he tries to project himself as a moderate, but now it is quite clear he is Taliban Khan. The opposition used to call him Taliban Khan. He came up riding on the coattails of the military and with the support of the Taliban. That is how his Tehreek-e-Insaf party came to power, Arnab, in the first place. And now he is showing his true colors. Look at the way he is trying to divide and define the world in terms of Islam versus the non-Islamic world. That is how he has created a clash of civilizations. And Arnab, this is the same mindset, the same civilizational divide. We saw Osama bin Laden talk about it. Today, Abu Bakr al-Baghdadi, the leader of ISIS, talks about it. And Imran Khan, the leader of a terrorist state, is also talking in the same vein, Arnab. So they are essentially the same. They all belong to one fraternity, which is jihadist. You know, the other thing was on the debate back. The other thing was, thank you. They are isolated because of this. Thank you. The other thing was, Atikur. Win the support of the rest of the world. The other thing was, Sambit. The other thing was that when he
he was rambling and cribbing about Kashmir, he was almost threatening the United Nations with radicalization when he said, don't you think 180 million Muslims in India... No, 1 minute. Just a minute. You see, good evening and welcome, ladies and gentlemen. It's good to be back after a short break, and I'm grateful for your viewership. Ladies and gentlemen, Prime Minister Narendra Modi has shown the world today and spoken in a brief, crisp, but I must say, very meaningful 16-minute, 40-second speech. In terms of acceptability, in terms of setting goals, when the person you cannot tolerate becomes the #1 global leader, far ahead of Boris Johnson's and Putin's and he's not the Donald #1 Trump's. global leader. Without doubt he is. Yourself. Without doubt he is. You've obviously not been following the news, Sunil Chopra. Not at all. I put that question to Sreeram, then asked Sreeram, who's sitting right there next to you. And I heard what he said. I heard also... Arnab, he is a global leader for one special reason, and that was outlined in the speech today, Arnab. He said, we are creating new institutions for the entire developing world. And remember, who is the audience today? UN General Assembly. Out of 193, 130 or more countries are classified as developing countries. The vast majority, if there was a vote in the UN General Assembly on the speeches, Modi would have scored a 170 or more out of 193, I can tell you, and that would be unprecedented. So the reason is, he mentioned the International Solar Alliance, he mentioned the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, he mentioned that India has a duty to the world, Arnab. Such a beautiful phrase, Arnab. Duty to the world. He said it's not charity, we are not doing it out of any kind of ulterior motive, we have a duty to the world. Only leaders talk like that, Arnab. The followers have narrow agendas, they have access to grind, and the Islamist hatred that Imran Khan was spreading showed how low he has fallen. But our Prime Minister rose so high and said, he listed out all the reasons why India is leading and why other developing countries are looking up to India as a model. Please don't be trivial. What do you mean ugly baat Trump Sarkar? For sanitation, please focus. For overall, economic development which is sustainable. These are big questions. And remember the applause, Arnab. We got the maximum applause when he mentioned the single use Sanjeev Srivastava. He got maximum applause when he mentioned the massive staggering figures. Sanjeev Srivastava. Of course I say today's speech is historic because it lays out a vision, and we hit the because it puts the focus of India, and it says today, Sanjeev, that Pakistan is a matter the world doesn't need to bother about because we are more than capable of handling it, and this speech is historic because it has a global vision. That's what makes it historic. The agenda on terrorism is clear, Sanjeev. The warning to Pakistan is clear. He speaks about multilateralism. He has led the way to advocate a shift in global foreign policy from bilateralism to multilateralism by urging these nations to shift away, this is a massive shift away from the traditional Indian foreign policy of non-alignment in the name of staying neutral. So what we are seeing here for foreign policy and international relations experts is a dramatic shift in Indian foreign policy and direction. I think I'd get everyone on the screen. I think we need to acknowledge that. When you say today that we are a leader in terms of leading the way on global concerns, then the world looks at you differently. Sanjeev, please. Internationalizing and we've got the massive support of the international community. So, Arnab, like I said, there is a time for cynicism. Chopra, that was said by G. Parthasarthi, not me. You have to understand, you may hate it. You may not like it. It may trouble you. You may have sleepless nights. You're going to have a nightmare tonight. You know why everyone's on? It doesn't trouble me. You are going to have a nightmare tonight because #Modi creates history. Now ask someone who is accomplished in these matters. Ask upset President Xi Jinping didn't come. He is trying to fool people. Who is he trying? Why are you upset? Because Putin didn't come, Xi Jinping didn't come. Is that why you're upset? What is he doing in Kashmir? Don't you know? The eyes and ears of the international. Everyone's on, please.
Nobody can pull wool over their heads. Yeah, you see, nobody They are, can be fooled. very, very Partha. savvy. No. The Yes, Sudhanshu Trivedi. Chopra is talking about befooling the people. It is the parliament of the world. अरे भाई सुनील cannot चोपड़ा fool जी आप anybody कहाँ there. बताने की बात करने लगे कि फूल कर बना रहे हैं? Between reality and obfuscation. नहीं, the biggest And fool, Modi put the reality in biggest perspective for fool them. of the people They which are somebody looking is up to trying to India make and is to the Imran Modi Khan himself with a and sense Mr. of Sunil hope. Chopra, your party. Imran Khan. Why do you? Imran Khan was talking about Islamophobia That's what when he is India taking represents support from for the China. world community today. जहां पर